भूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवात्योतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुवात्योतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तरिक्षे तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमस्साम सुवात्योतु न सच्चवज्जेन सोत्थिते सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सब्बभो विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं ती साधु साधु। You are going to observe Pansin. Say Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saranam gacchāmi. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammāṃ
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादत्ता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादष्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और ये शुभ दिन के लिए जो शुभ दिन यानी कि 2564 तथागत बुद्धाज डे, जन्मदिन, ज्ञान और परिनिर्वाण, ये दिन हमारे लिए इतना शुभ है जिस तरह के क्रिश्चियन के लिए वो नाताल है और हिंदुओं के लिए दिवाली है, मुसलमान भाई लोगों के लिए ईद है, ईद मुबारक होता है। इस तरह से हमारा भी एक वार्षिक महोत्सव आज हम लोग मना रहे हैं और आज हमारे लिए इतना खुशी का दिन है कि हम भिक्षु लोगों को 30 भिक्षु को 30 भिक्षु को और 30 भिक्षु तो ऐसे कि 9 कंट्री के डिफरेंट कंट्री के भिक्षु को हमने भोजन दान देने का मौका मिला। हम सोचते थे कि हम कैसे भोजन दान देंगे, लेकिन भोजन दान के लिए सामने से उपासक उपासिका आए और उपासक उपासिकाओं ने सामने से भोजन दान ऑनलाइन भिक्षु को भोजन दान दिया। कि हम सोचते थे कि अभी भिक्षु को हमारे हाथों से कैसे हम भोजन दान देंगे, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने सामने से सुझाव दिया और भिक्षुओं ने भी कहा कि हम लोग अवश्य आपको जो संदेश देना है, आपको जो धम्म देशना देना है, 30 पंचशील देना है, अष्टमार्ग देना है, वो हम भी हमारा काम निभाएंगे। भिक्षु ने भी सामने से कहा और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हुआ। वो प्रोग्राम को आप देखेंगे अभी और उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रियागुजार है और खास तौर पर जो हमारे मिनिस्टर राजकुमार बडोले साहब और अभी के ऑनरेबल मिनिस्टर है डॉक्टर नितिन रावत साहब, वो भी आए, उसके लिए भी हम बहुत शुक्रियागुजार है। और खास तौर पर हमारे जो भीमराव अंबेडकर, हमारे बाबा साहब के ग्रैंडसन, वो भी वहां आए और ऐसे और भी महान काफी हस्तियां आई वहां, दिग्गज लोग आए और वो लोगों ने किस तरह से बाबा साहब के बारे में तथागत की जन्मदिन उत्सव के बारे में किस तरह से अपना संदेश दिया, भाग लिया, वो आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इस बात से मैं अभी ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आप प्लीज आप एंजॉय करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। Jai Bhim, everybody. I am Captain Praveen Nikhade, Samta Sainik Dal, led by grandson of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, that is Honorable Bhimrao Yashwant Ambedkar. He is the Supreme Commander
of Samtasanik Dal, as well as the National President of Buddhist Society of India, founded by Dr. Babasaheb Ambedkar himself. First of all, let me give my best wishes on the eve of Buddha Jayanti on behalf of my organization, Buddhist Society of India, to everybody. Here, I would like to appeal to everybody that today is a great day, that we are celebrating Buddha Jayanti. And on this day, I would like to inform everybody the beautiful work done by Buddhist Society of India, led by Bhimrao Yashwant Ambedkar Sahib. We are spread in 22 states and 2 union territories of India. We conduct 24 different types of camps in viharas to bring people from different backgrounds under the umbrella of Buddhism. We teach them the teachings of Buddha. Namo Buddhaya, Jai Bhim. I introduce myself. I am Mr. Bhimrao Yashwantrao Ambedkar, grandson of Dr. Babasaheb Ambedkar. Last 6 years, I am associate with Buddhist Society of India, working as a working president of Buddhist Society of India. First of all, I give best wishes to all the Buddhist peoples, Buddha Purnima or Vaishakhi Purnima. Best compliment from myself and my organization, Buddhist Society of India. There are the many organizations in different countries work for Dhamma, spreading the Buddhism, teaching of the Buddha. And through this, all the organizations, we spread the Buddhism throughout the world and hope so the world will achieve peace and prosperity. The Buddhist Society of India, that is a mother organization for Indian Buddhists, founded by Dr. Babasaheb Ambedkar. He is the first president. And through this society, Babasaheb embraced Buddhism at Nagpur on 14 October 1956. Along with Babasaheb, 5 lakhs people converted to the Buddhism. This is the historical event. One community which was considered as a scheduled caste, scheduled tribe, untouchables, transformed into the Buddhism. And since then, revival of Buddhism start in India, Lord Buddha's land. Buddhist Society of India, Dhamma work, not only in Maharashtra, but it is spread 22 states in India. It is the largest
Ambedkari organizations who have a karyakartas, activist, infrastructures, almost all the major state. And through these organizations, we are spreading Buddhism in different states. नमो बुद्धाय। मुझे लगता है आप सभी को हिंदी अच्छे से समझती है, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से। आज हम सभी बौद्ध पूर्णिमा के इस मनाने के लिए इस लाइव संगोष्ठी में हम सभी एकत्रित हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है। आज यहाँ पे आदरणीय गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस ऑनलाइन सेलिब्रेशन में दुनिया भर से सभी देशों से कई महानुभाव आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी और कई सभी यहाँ पे जुड़े हो। उन सभी को, बौद्ध उपासक उपासिका, इन सभी को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज एक कठिन दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। दुनिया के लिए ये बहुत कठिन ऐसे ये जो समय है, और एक कोरोना की इस भयानक महामारी से हम सभी यहाँ पे लड़ रहे हैं। जहां तक हम भारत की बात करें तो जैसे कि हम सबको पता है कि 30% से ज्यादा लोग जिस देश में दारिद्र्य रेखा के नीचे हो, जहाँ पे बड़े मात्रा में हमारे लोग स्लम में, झोपड़पट्टियों में रहते हो, जहाँ पे अभी भी जात के नाम से और धर्म के नाम से लोगों को पहचाना जाता हो, ऐसी स्थिति में हमारे लोगों के लिए ये जो महामारी है, ये बहुत बड़ा विषय आज की इस घड़ी में है और उसके लिए हम सभी को लड़ना है। और इसके लिए ये जो डायस आदरणीय गौतम जी ने एक सभी लोगों को भगवान बुद्ध के विचारों से, जो सद्धम्म का विचार है, जो हम सबको हमारे आचरण से एक दूसरे को जोड़ता है, जिसमें ये करुणा और प्रेम का वास होता है। तो ऐसी घड़ी में हम सब जो दुखी है, कष्टी है, क्योंकि हमारा धम्म ही हमें कहता है, हमें बतलाता है, सद्धम्म के मार्ग पर हमें लेके जाता है। तो निश्चित ही हम सब इस महामारी से लड़ते समय हम एक दूसरे का साथ लेकर कैसे हम जो दुखी हो, कष्टी हो, ऐसे लोगों को कैसे साथ देंगे, इस दृष्टि से भी यहाँ पे विचार हो तो ज्यादा अच्छा होगा। निश्चित ही आप सभी तथागत भगवान बुद्ध ने जो 2500 साल पहले इस पृथ्वी पर जो उन्होंने जन्म लिया और विशेष तौर पे भारत भूमि पर उन्होंने सद्धम्म का मार्ग, जो आज दुनिया को शांति और करुणा का संदेश, प्रज्ञा और शील का संदेश देता है, उस दिशा से ही हम सबका इस दुनिया का भला होने वाला है। तो आदरणीय गौतम जी और सभी साथियों को मैं इस बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी आज इस लाइव संगोष्ठी में एकत्रित हुए और सारी दुनिया को एक छोटे से इस डायस के माध्यम से हम सबको एकत्रित लाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी शुभकामना के साथ कि इस कठिन घड़ी में आप सभी जन, आप सभी, हम सभी लोग एकत्रित हुए। निश्चित ही बाबा साहब, जिनका विचार इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व का जो विचार उन्होंने दिया, और उसी दिशा से हम सभी जा रहे हैं। निश्चित ही
और हम सबको इस विचार को, भगवान बुद्ध के विचार को और ज्यादा से ज्यादा मजबूती से, संकट तो बहुत आएंगे निश्चित ही, हम सब को बहुत कठिन वैसे ये रास्ता है, फिर भी इस रास्ते से जाते समय हम सभी ने एकत्रित होके, चाहे इस कोरोना की महामारी के साथ लड़ना हो, चाहे फिर हमारे ऊपर कितने भी प्रहार क्यों न हो, उस दिशा से हम चलते हुए एकत्रित होना चाहिए। फिर इसी शुभकामनाओं के साथ इस बौद्ध पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे सभी दोस्तों की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लंदन में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का घर था, हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट ने परचेस किया था, उसका कोई मसला चल रहा था, वो रिजॉल्व हो गया ना अभी? Oh yes, we got a full-fledged now Ambedkar Museum status. Very good, very good. If anything is there for me, because just now the social justice minister was with me in a meeting. Right. He was asking me when I have told that there is a meeting from abroad, VC, regarding Buddha Purnima, and some people are joining from London also. So he was asking me that time. Okay. क्या डिस्कशन हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए नहीं, वो फुल फ्लेज वो अभी मिल गया है हमको। इधर मिनिस्टर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर, उसने भी सपोर्ट किया, और हाई कमीशन ने भी पूरी तरह से उसके लिए काम किया, और आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग मिला। तो अभी वो हमारे हाथ में है, और आगे का काम जो अभी है उसके लिए वो चिट्ठी आपको लिखी हुई है, तो आपने अभी जवाब देना है उसका। ठीक है, दे देंगे, जरूर दे देंगे, फेवरेबल करेंगे जी। बाकी कुछ लोग अमेरिका में भी उसी प्रकार से, वॉशिंगटन में कुछ लोगों ने शायद जमीन ली है, और उन लोग कह रहे हैं कि वहाँ हमको भी कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट से मदद चाहिए जी। सो आई एम लुकिंग इनटू इट। We know that there is a lockdown, and in the lockdown we cannot do many things. Yes, that's correct. Yeah, that's correct. Anyway, आपके बहुत बहुत शुभकामना, और आज के दिन के लिए आपने बुद्धा डे के, बुद्ध जयंती के लिए जो आपने बधाई दी और आप आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रोफेसर CD नाइक हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में गत 24 वर्षों से प्राध्यापक, अधिष्ठाता और पूर्व कुलपति की हैसियत से कार्यरत हूँ, और 2564वीं बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में मैं बौद्ध संदेश संक्षिप्त में देना चाहता हूँ। श्रियं परार्ध्यां विदद् विधात्रिजित तमो निरस्यन् न विभूतभानिभृत नोदन्निदाघं ऋतचारुचन्द्रमा सवन्द्यते अर्हनिहयस्य नोपमा। I pay my obeisance to such unique triple sacred master of the world, who has surpassed the gifts of the so-called creator, who has dispelled the darkness of existence more brilliantly than the sun, who has soothed the heated state better than the cooling beautiful moon. Baba Saheb Ambedkar expressed that the principles of life called liberty, equality and fraternity
I have borrowed from my master Gautam Buddha. Thus, Buddha was democratic great man. His teaching was social truth, and his society was and is and will remain a biography of great men as an ever-inspiring force of universal life. Thank you very much for having me here today. I'm pleased that to be part of this ceremony of Vesak Purnima. My name is Venerable Ramahalau Panyasiri from Thailand, as you mentioned earlier. And I have been here for over 33 years in England. And at the moment, the work that I'm doing here, acting on behalf of the Sangha Authority from Thailand as the Council of the monks in UK. And because they asked me to work on behalf of the Sangha Authority in 4 continents, for Europe, from Thailand, from Europe, America, and also from UK. We have about 4 council of the monks from different parts of the world. America, we have 100 monks, 100 temples. Europe, 100 temples. England, about 25 temples. Singapore, Malaysia, and New Zealand, India, Nepal. Then we organize WBDO in England. So it started just recently. I would like to let you know that the work of the Buddhist monks in Thailand, and we would like to spread the Dhamma, the Buddha Dhamma, to Europe and other countries. We see at the moment, Buddhism can be very helpful and very good for the world. And because I have been involved with Dr. Ambedkar Society at the time in Birmingham and also in Wolverhampton, that's why I am invited here today. And I'm very pleased to be able to say something in the message on behalf of the Sangha Authority. The Sangha Authority in Thailand, we very much appreciate the work of the people from different nationality. And indeed, Vesak Day, that everybody know that we have to be social distancing. Therefore, the work that you are doing today is the great work, very nice, important work that we join together and to be able to talk to each other. The Buddha Dhamma can be very helpful for everybody throughout the world. And we are in this difficulty time. Therefore, Buddhism can be spread to the people without any problem. Therefore, most of people now, they back to themselves to think what is the best thing in life that they can practice in their daily life. By saying that, we learn that a lot of people who are practicing Buddhism now, and they have less difficulty to deal with the difficulty in life when we lock down. Therefore, the lockdown is the time for all of us to be able to use Buddhism in a practice way, to use the basic Buddhism, to especially mindfulness, sati or mindfulness is very important. Satipatthana. We can go back to the Buddha time, the day that Buddha he was under the tree, achieve enlightenment. We can start from there, use the teaching of the Buddha at the time to spread how after many years in the forest, and after that he achieved enlightenment. After enlightenment part from day 1 until 45 years at the age of 80 is the time that we should look at how his teaching can be practiced, can be applied to our daily life. Think about when we were with the Buddha, if we were to be there in the Buddha time, how we can think about our life in daily life. How can we apply the teaching in daily life from day 1 that we supposed to be with the Buddha and pay respect, like you take 5 precepts and you offer the dana, you practice more and more in the teaching. I am so happy
This is something that I would like to say to all of us here. We use the Buddha teaching one step at a time, practice puja, even you cannot go out, you use in your family life, daily life, at least once in the morning, one in the evening, and think about yourself, be by yourself, even you are isolated, teach your children to understand about Buddha Dhamma, and teach your children to understand how the life can be difficulty if you not learn how to cope with the difficulty in life. So the life that we are now, maybe not only now, it can be last longer. So we use the Buddha teaching, Buddha Dhamma, to learn and to teach and practice, and then go from step one, level one of understanding, like you are practicing 5 precepts now, that level one. And then second level, it go further to use bhavana. Dana, sila is a part of our life, and bhavana. So you practice all of this generosity, you practice 5 precepts, you practice 8 precepts, and after that, go further and deep on your practice. This is the message from me for today. Thank you very much indeed. Most Venerable Mahasangha, my due respect to you all. Dr. Gautamji and all the organizers, thank you for organizing this wonderful international meeting. So going back to the time in Buddhagaya, the 5 ascetics left him, so he was quite all alone by himself in the forest. He did not run away and then start panicking, but he took that as a big challenge. And then he sat under the Bodhi tree. And then even the Maras, okay, but he had a goal, he took that challenge, he took the barriers as mindfully and worked on it. So all the difficulties are good opportunities. We need to make the most out of it to practice Buddha Dhamma. There are born Buddhists, there are practicing Buddhists as well. So if you are a practicing Buddhist, we need to develop mindfulness. So taking the courage that ascetic Gautama, had, taking the courage, Dr. Ambedkar developed in all of us, we need to actually take this great determination to overcome all the difficulties that we are facing during this pandemic lockdown times. There can be lots of opportunities we can practice Dhamma. As Bhante, Venerable Dr. Lao Panyasiri said, Dana Sila Bhavana. So, Bhavana can be done every day, day in, day out. You can be stressed, having a bit of difficulty, not being able to go out and do things that you want to do causes stress. Children can have boredom, family members fighting for the TV channel, family members complaining about the food. And all of these things are quite, incidents that we can mindfully observe and be alert, because just before the Buddha passed away on a day like today, he said, be mindful, Handadani bhikkhave amante muvai dhamma sankhara. All these conditioning things are impermanent. All these things that have come in front of us are impermanent. And we need that mindfulness, we need that alertness throughout, representing centers all. Now, in the program, there is meditation as well. So representing the London Mindfulness Meditation Center here, I urge you to actually, be mindful of the state of your mind. Be mindful of the state of other people around you. We need to be aware. So A is for awareness. Be aware of those things happening around, and don't let them control you, but develop mindfulness. So be with that experience, and then you can actually overcome it, because we are mindful of those things. We are understanding that those things are not here forever. Even the difficulties that arise within the homely environment, neighborhood, and is not permanent. They are things that have been conditioned, and once the conditions goes away, all the suffering, unhappiness will go away. So it is important to take the lessons from the Buddha, to develop
determination, courage to overcome all the difficulties that we are facing now. It is quite easy. Take it a challenge. Just go back to the Buddha's life story. A few days or even a day before his enlightenment, all the challenge the ascetic Gautama faced was overcome by determination, was overcome, and he sought enlightenment. And he gave us this wonderful message. A message just about few days after his enlightenment. He says, I have stopped all the suffering by finding the root of suffering, which is attachment, or which is expectations. And let's actually try to diminish our expectations to the way we want them to be. Take them as try to understand, be mindful of things that happen around you and see them as it is, see them as conditioning, see them as arising, see them control you if you have changed yourself. And that is a good way to actually develop mindfulness, And again, just to recap everything I said, all the difficulties and problems we are facing are a big challenge to everyone, all of us, everyone in the world is affected. Don't take it that it is happening to you as your family, to us as a nation, it is a pandemic around the world. And to universalize this is a way to practice realization as well, or the Dhamma properly, because the concept of anatta, to actually not take it personally, the dukkha, the suffering that we have is universal at the moment. And this is what the Buddha wanted us to understand. Yeah, he showed us the potential as humans to actually develop that courage. No one can do this for you, but you yourself can make a choice of what you can do with the difficulties that you face. Are you going to suffer, or are you going to take it as it is and let it go? We can develop that skill, the ability to actually face the challenge. Now, Buddha, as a human, achieved everything to the highest potential, and he gave us that courage, and he showed us during Vaisak that it is possible to overcome everything. And we need to actually be able to actually do this. We can do this, because this is a simple thing. Obviously, it is causing suffering to many families, those who actually, but when you develop kind and compassion, as Venerable Dr. Lava Panyasiri said, be kind to each other, be kind to your family. Most importantly, be kind to yourself. Develop compassion for people around you. Take care of yourself. Take care of each other. The loving kindness, the metta that we develop can truly be a strong driving factor to look after each other, to actually practice the Dhamma properly. These are the times, once again, great opportunities to practice the Dhamma properly, not to take the pandemic as a big, burden to and think that it is causing, problem for us. Yes, it is causing a problem, but we can come out of it with our own effort on practicing the Dhamma. So let's practice the Dhamma of realizing impermanence. Let's practice the Dhamma about developing sati and mindfulness. Let's also practice, developing kindness and compassion to all of yourself and your family members. So with those, few reflections on how to cope with during the pandemic time, how to practice the Dhamma, I stop here with greetings from London to every one of you, and blessings from London Mindfulness Center to every one of you as well. So thank you for the organizers for organizing this. Okay, sadhu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने भारतीयों को फिर से सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया।
आदरणीय भंतेगण, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और अन्य धम्म बंधुओं, सबसे पहले आप सबको बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं। आज सारे विश्व में इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से और बुद्ध जयंती के नाम से लोग ये मना रहे हैं। तो जब हम कहते हैं बुद्ध जयंती, तो इसका अर्थ क्या है? जय यानी जीत या विजय, और जयंती यानी जय का उत्सव। तो जब हम कहते हैं कि बुद्ध जयंती यानी बुद्ध के जय का उत्सव, तो किस बात की जय, किसके ऊपर बुद्ध ने जय प्राप्त किया? तो ये कोई बाहर के कोई दुश्मन नहीं थे। ये जो स्वयं के अंदर जो राग द्वेष और मोह है, उन दुश्मनों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उन्होंने जय प्राप्त किया। इसलिए हम इसे बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। और भी ये जो दिन है, ये 3 कारणों से सारे बौद्धों के लिए बड़ा ही मंगल दिन है, क्योंकि इस वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो ये तीनों दिन इस एक वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ये घटनाएं घटी। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ठीक है, सिद्धार्थ गौतम का जन्मदिन है तो आप उसे उत्सव के रूप में मना रहे हैं, और वैशाख के दिन उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसका भी आप उत्सव मना रहे हैं, ये भी समझ में आता है। लेकिन बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ, जब उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो उसे आप लोग उत्सव की तरह कैसे मनाते हैं? वो तो शोक का दिन होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन बौद्धों की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जब कोई आम आदमी जिसने अभी निर्वाण प्राप्त नहीं किया, मार्ग फल प्राप्त नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है तो लोग रोते हैं। तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि वो उनके बहुत ही नज़दीक रिश्तेदार हैं और क्योंकि वो चले गए तो इसलिए भावुक होकर रो रहे हैं, ये एक कारण है। लेकिन बौद्धों की दृष्टि से और एक भी कारण है, और वो ये है कि ये जो व्यक्ति है जिन्होंने अभी निर्वाण प्राप्त नहीं किया, तो वो फिर से इस संसार में आने वाले हैं, और फिर से संसार में आना यानी फिर से दुख चक्र में पड़ना, फिर से बुढ़ापा, फिर से बीमारी, फिर से मरना। तो ये जन्म मरण का चक्र बना रहता है। तो इस कारण से लोग शोक मनाते हैं कि भाई आपने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया, आप फिर से संसार में आने वाले हैं और फिर से दुख झेलने वाले हैं। इस वजह से वो रोना रोते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति फिर से इस संसार में आने वाला नहीं है, वो फिर से इस जन्म मरण के चक्र में पड़ने वाला नहीं है, वो फिर से दुख के चक्र में पड़ने वाला नहीं है। ये सारे दुखों से मुक्त हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जो कोई भी निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति
जब शरीर त्याग देता है तो वो भी एक उत्सव ही है, वो कोई शोक का दिन नहीं है। तो इस तरह से इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब रही बात बुद्ध की शिक्षा की, तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दी और बुद्ध बौद्धों के लिए क्या मायने रखते हैं। तो अंग्रेजी में कहा गया है कि बुद्धा द गाइड टू ह्यूमैनिटी टॉट धम्मा टू एक्सपीरियंस रियलिटी, यानी बुद्ध सारे मानवों के लिए एक मार्गदाता है और उन्होंने जो धम्म सिखाया है वो सच्चाई को जानने के लिए सिखाया है। जो परम सत्य है उसको अनुभव से जानने का जो मार्ग है उन्होंने बताया है। तो हम बुद्ध को मार्गदाता कहते हैं, वो मोक्षदाता नहीं है। हम उनको गाइड कहते हैं, गॉड नहीं कहते। तो गाइड में और गॉड में क्या अंतर है? जब भी हम गॉड कहते हैं तो हमारी धारणा ये है कि ये जो गॉड है ये किसी ना किसी प्रकार से कोई मैजिक मिरेकल, कोई चमत्कार करके हमारा उद्धार कर देगा, हमारे सारे दुखों को दूर कर देगा, हमारी इच्छा पूरी कर देगा। इस तरह की जो धारणा रखते हैं वो लोग गॉड इस बात का मानते हैं या ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को वो गॉड कहते हैं आमतौर पर। लेकिन यहां पर बुद्ध को गाइड कहा गया है, क्योंकि बुद्ध कोई चमत्कार कर कर आपको मुक्त करने वाले नहीं है। बुद्ध गाइड है, यानी एक मार्गदाता है। और वो किसके मार्गदाता है? पूरी मानवता के मार्गदाता है। वो केवल शाक्य कुल के मार्गदाता नहीं है, क्योंकि वो शाक्य कुल में पैदा हुए, इसलिए वो शाक्य कुल के मार्गदाता ही नहीं है। या उन्होंने बुद्धत्व भारत में प्राप्त किया तो केवल भारतीयों के लिए मार्गदाता नहीं है, या जितने भी विश्व में बौद्ध है केवल उनके लिए मार्गदाता नहीं है। वो सारे मानवों के लिए मार्गदाता है, गाइड टू ह्यूमैनिटी, इज नॉट गॉड टू ह्यूमैनिटी। क्योंकि जैसे हमने बताया कि गॉड यानी जो सर्वशक्तिमान है, जो चमत्कार कर कर, कुछ मैजिक मिरेकल कर कर हमें मुक्ति दे सकता है, हमारे दुखों को दूर कर सकता है। ऐसी जो धारणा रखते हैं वो गॉड इसमें विश्वास करते हैं। लेकिन बुद्ध को हम गाइड कहते हैं, यानी मार्गदाता कहते हैं। तो मार्गदाता यानी जो खुद जिस मार्ग पर चल चुके हैं और उन्होंने दुखों का अंत किया है, वही मार्ग वो दूसरों को भी बताते हैं। वो केवल मार्ग बताते हैं, लेकिन उस मार्ग पर हर किसी को खुद चलना है और अपने मंजिल पर पहुंचना है। बुद्ध किसी को भी अपने कंधे पर उठाकर लक्ष्य पर नहीं पहुंचाते। तो उस मायने में वो केवल मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। It's a very, very difficult time for humanity, but fortunately we have the Buddha to give us strength. So I'm very grateful to be part of your celebrations of the Buddha today. Now, most of you, most Buddhists in India, came to the Buddha through Baba Saheb. And his approach to the Buddha is particularly appropriate at this time. It's said that he liked to see the Buddha walking, of course, out to people in compassion and fearlessness. As many of you know, I've been involved in developing the Nagarjuna Institute at Nagaloka in Nagpur, a Buddhist training center for Ambedkarite youth all over India. And we have a large campus. And we wanted a statue of the Buddha at the center to show that the essence of Baba Saheb's teaching was to be found in the Buddha. So we had to have a Buddha, a representation of the Buddha that Baba Saheb would have liked, according to Baba Saheb's vision. So now we have a magnificent 36-foot high brass image of the Buddha walking. Now this is very significant because
the Buddha is usually seen sitting. But actually, most of the time, he was walking. After a few weeks after his enlightenment, after absorbing his enlightenment, what did he do? He set out walking. 7 days it took him to get to Sarnath, and there to share what he'd learned with his earlier disciples. And then after the first rainy season retreat, he had 60 enlightened disciples, we understand. What was his advice to them? Go out, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya, for the welfare and happiness of the many people. And he said, don't two of you travel by the same road. He didn't say, sit under your Bodhi tree and enjoy your enlightenment. He said, no, go, communicate, help people. Then again, he was in one place only for 4 months of the year. And that was because of the restrictions of the rains, for no other reason, we understand. The rest of the time, he was 8 months a year, he was walking out to people, communicating. We understand that every day he would do the compassion meditation, and he would think, who can I help? Who can I engage with? Who can I help on the path to enlightenment today? So the Buddha walking, I believe, brings out the real spirit of the Buddha. His life exemplifies compassionate action. That's what we see if we look at the Pali Canon, sutta after sutta. And it's the same with his teachings. Now, again, looking through the window to the Dhamma that Baba Sahib gave, what is the essence of the Buddha's teaching? So the essence, Baba Sahib says, is Sad Dhamma. And he says there are two aspects to Sad Dhamma in the Buddha and his Dhamma. He says there's, on the one hand, there's purification of mind, as Bhantaji was talking about. And on the other hand, transformation of the world. And he said the two have to go together. You can't have one without the others. So we develop our minds through prajna, shila, karuna, maitri. But that's not enough. Baba Sahib said, those teachings must manifest in our behavior. And he was very specific in how those teachings should manifest. He said those teachings must manifest in breaking down barriers between people. Breaking down barriers between people. And most of all, the last section of this on the chapter on Sad Dhamma, he says, establishing equality. So this to him, establishing equality, was the test of our Dhamma practice. And as you can see, this is especially important at present. We all know, you've experienced it, many of you, the terrible inequality of the caste system. Still, so many are suffering. You know, I live in Pune, I live in Yaroda. In between me and my office, the Masterkey Center, just 5 minutes, 10 minutes walk, there's a large Zopapati slum. I understand that 20,000 of those people have had to be moved because of the terrible conditions they live in. Yeah? Housing, education, employment, social relations, discrimination, violence. This is still suffered by so many millions of people all over India every day. And the COVID-19 virus has exposed this terrible inequality even more. It's absolutely horrific what we're seeing at the moment. Baba Sahib's point is that if we're practicing the Dhamma, we cannot ignore this. We cannot just live comfortable lives ourselves. You know, the danger, I mean, Shila and meditation are absolutely musts for the practice of the Dhamma. But the danger in just if that we become too comfortable in our lives. So we have to do everything we can as Buddhists to destroy inequality. This was one of Baba Sahib's 22 vows. I shall endeavor to establish equality. So empowered by the Dhamma, his disciples can do this. This is the great challenge we have before us now, and we have to rise to it.
I believe that during and after this virus, this terrible virus, the Ambedkarite community will become more strong than ever and will set an example to people not only throughout India, throughout the world, for the way they're working and the way they're practicing the Dhamma and going forward. So this is the meaning of our walking Buddha. This is what it means to be a Buddhist follower, Baba said today. And this is what we have to recommit ourselves to today. Namo Buddhaya, Jai Bhim.